Hello guys, welcome to this channel. In this session, we will do MCQs on the constitutional amendments. As this is one of the important topic from the Indian polity, so watch the complete session guys because all the questions are important for the competitive examination. So let us start the session with first question. The question is which article of the Constitution of India lays down the procedure for the amendment of the Constitution? A option is 348, B option is 358, C is 368 and D option is 378. So the right answer is option C, that is Article 368 lays down the procedure for the amendment of the Constitution. Next question is a bill for the amendment in the Indian Constitution can be presented. A option is only in Lok Sabha, B is only in Rajya Sabha, C is either in Lok Sabha or Rajya Sabha and D option is in the Supreme Court of India. The right answer is option C, that is either in Lok Sabha और राज्य सभा. अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं हमारे संविधान में तो जो बिल है उसको लोकसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी. ए ऑप्शन इज ऑर्डिनरी बिल, बी इज मनी बिल, सी ऑप्शन इज फाइनेंस बिल एंड डी इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. The right answer is option D, that is Constitutional Amendment Bill. Next question is the president power to veto a bill for amendment of the Constitution has been taken away by substituting the word shall give his assent by which amendment? A option is 44th Amendment, B is 23rd Amendment, C option is 24th Amendment and D is 42nd Amendment. So the right answer is option A, that is 44th Amendment. गाइस हमने प्रीवियस सेशन में किया है दैट प्रेसिडेंट के पास जो है वीटो पावर होती है, लेकिन अगर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वहां पर जो है इस वीटो पावर की जगह जो है वर्ड दिया गया है, दैट इज यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, WORD आएगा वर्ड, दैट इज शैल गिव हिज असेंट. उसको अपनी सहमति जो है बिल के साथ जतानी ही पड़ेगी. अगर वो दोनों जो है राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो ये जो है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐसी बात की गई है कि उसकी प्रेजेंट की वीटो पावर को रिप्लेस किया गया है बाय द वर्ड दैट इज शैल गिव हिज असेंट. तो वो बात की गई है 44th अमेंडमेंट 1976 में. ओके. Next question is when was the first bill for the amendment of the Indian Constitution presented? A option is 1950, B is 1951, C option is 1955 and D option is 1958. The right answer is option B, that is 1951. Next question is the first constitutional amendment bill passed in 1951 was related to. A option is security of the country, B is security of the Prime Minister, C option is protection of the agrarian reforms in certain states, D option is scheduled caste and scheduled tribes. The right answer is option C, that is protection of agrarian reforms in certain states. Next question is in the event of the upper house rejecting a constitutional amendment bill passed by the lower house, उस केस में क्या होता है जब जो है बिल जो है लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है बट वो राज्यसभा के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन इज द बिल विल हैव टू बी ड्रॉप्ड, बी इज अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट may be convened to consider and pass the bill. C option is the bill shall be deemed to have been passed by the both houses of the parliament if the Lok Sabha passes it again by a 2/3 majority. And last option is the bill shall be deemed to have been passed by both the houses of the parliament despite the disapproval of the bill by the upper house. So right answer is option A, that is the bill have to be dropped. वो बिल पास नहीं होगा, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा. Next question is the 9th schedule to the Indian Constitution was added by. A option is first amendment, B is 8th amendment, C option is 9th amendment and D is 42nd amendment. The right answer is option A, that is first amendment. 1951 को जो है 9th schedule को add किया गया था. Next question is the 93rd Constitutional Amendment Bill deals with the. A option is continuation of reservation for backward classes in government job. B is free and compulsory education for all children between the age of 6 and 14 years. C option is reservation of 30% post for women in government recruitments. And last option is allocation of more number of parliamentary seats for recently formed states. So the right answer is option B, that is free and compulsory education for all children between the age of 6 and 14 years. Next question is right to education introduced through the 86th Amendment came into force. A option is 2002, B is 2004, C is 2008 and D option is 2010.
So the right answer is option D, that is right to education, introduced through the 86th Amendment Act 2010. Next question is, by which constitutional amendment OBCs have been given 27% reservation in the admission to the educational institution? A option is 92nd, B is 93rd constitutional amendment, C option is 94th amendment, and D is 96th amendment. The right answer is option B, that is 93rd amendment. Next question is, by which of the following amendments of the Indian Constitution the term cooperative societies was added in the Article 19(1)(c)? A option is 42nd Amendment Act 1976, B is 73rd Amendment Act 1993, C option is 97th Amendment Act 2011, and D option is 36th Amendment Act 1975. So right answer is option C, that is 97th Amendment Act 2011. Next question is, which one of the following amendments of the Constitution of India converts the Union Territory of Delhi into the National Capital Region of Delhi? A option is 69th Amendment, B is 70th Amendment, C option is 73rd Amendment, and D option is 74th Amendment. The right answer is option A, that is 69th Amendment. Next question is, which of the following has banned floor crossing by the members elected on the party ticket to the legislature? A option is 52nd Constitutional Amendment Act, B is Representation of Public Law, C option is 42nd Constitutional Amendment, and D is 44th Constitutional Amendment. The right answer is option A, that is 52nd Constitutional Amendment Act. Next question is, 52nd Constitutional Amendment Act is related to: A option is defection, B is reservation, C is election, and D option is protection of minorities. The right answer is option A, that is defection. Next question is, the authoritative text of the Indian Constitution in Hindi was authorized to be published by which of the following constitutional amendments? A option is 57th Amendment 1987, B is 58th Amendment 1987, C is 59th Amendment 1988, and D option is 60th Amendment 1988. The right answer is option B, that is 58th Amendment 1987. Next question is, which one of the following amendments to the Constitution is related to the lowering of the age of voters? और इसमें जो है एज को जो है 21 से कम करके जो है 18 कर दिया था, तो वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? ए ऑप्शन इज 61st अमेंडमेंट, बी इज 44th अमेंडमेंट, सी ऑप्शन इज 42nd अमेंडमेंट, एंड डी इज 24th अमेंडमेंट. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 61st अमेंडमेंट, और ये हुआ था ड्यूरिंग द जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी. Next question is, the 79th Amendment of the Indian Constitution is related to: A option is center-state relation, B is establishment of two political parties, C is fundamental rights, and D option is reservation of SCs and STs in the Lok Sabha and state legislative assemblies. The right answer is option D, that is reservation of SCs and STs in the Lok Sabha and state legislature assemblies. Next question is, the Keshav Nanda Bharti case is important because: A option is it sets aside the orders of the executive, B is the Supreme Court interpreted the basic feature of the Constitution, C is it brought the union government in the dock, and D is none of the above. So right answer is option B, that is the Supreme Court interpreted the basic feature of the Constitution. Next question is, the Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure of the Constitution in which of the following case? A option is Golaknath case in 1967, B is the Sajan Singh case in 1965, C option is the Shankari Prasad case in 1951, and D is the Keshav Nanda Bharti case in 1937. The right answer is option D, that is the Keshav Nanda Bharti case in 1973. Next question is, in India, who is competent to amend fundamental rights of the citizen? A option is Lok Sabha, B is Rajya Sabha, C option is Parliament, and D is Supreme Court. Right answer is option C, that is Parliament. Next question is, which of the following Constitutional Amendment Acts was termed as mini constitution? A option is 42nd, B is 44th, C option is 46th, and D is 50th. The right answer is option A, that is 42nd Amendment Act को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है. Next question is, which of the following constitutional amendment is related to the fundamental duties? A option is 42nd, B is 44th, C option is 46th, and D is 50th.
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 42nd। जो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाइफरगेटेड द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनटू टू सेपरेट बॉडीज? A option is 42nd amendment, B is 44th amendment, C option is 89th amendment, and D option is 93rd amendment. The right answer is option C, that is 89th amendment. Next question is, when were the fundamental duties mentioned in the Constitution? A option is at the time of framing of Constitution, B is on 26 January 1950, C option is in the 42nd Constitution Amendment, and D is in the 41st Constitution Amendment. तो इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस ही किया दैट कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किया गया था थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो ऑप्शन बी सी आएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 98th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू। ए ऑप्शन इज एम्पावरिंग द सेंटर टू लिवाई एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, बी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, सी इज रीएडजस्टमेंट ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज on the basis of the population census 2001, and D is the demarcation of new boundaries between the states. So this, that is 98th amendment bill, is related to the constitution of the National Judicial Commission, और ये 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर 2014 में। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट इज जो नेशनल जुडिशियल कमीशन है इसको कब फॉर्म किया गया था, सो आपको याद रखनी है 2014 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97th Constitutional Amendment Act of 2012 is concerned with. A option is free and compulsory education for children up to the age of 14 years. B is organization and working of cooperative societies. C is stringent measures to deal the terrorism. And D is provision of Lokpal to prevent corruption. So the 97th Constitutional Amendment Act जो हुआ था 2012 में, it concerned with the organization and working of cooperative societies. So that's why option B is the right answer. Next question is, by which constitutional amendment the number of central ministers has been limited to 15% of the total number of the members of Lok Sabha? ये क्वेश्चन भी हमने किया है दैट कि सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं उनका मैक्सिमम उनका नंबर जो है कितना रह सकता है। सो इट शुड बी 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राइट। सो वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐसा मेंशन हुआ है संविधान में। तो ए ऑप्शन इज 91st अमेंडमेंट, बी इज 92nd अमेंडमेंट, C option is 19th amendment, and D is none of the above. The right answer is option A, that is 91st amendment. Next question is, Sikkim became a new state by. A option is 30th amendment of the constitution, B is 34th amendment of the constitution, C option is 35th amendment of the constitution, and D is 36th amendment of the constitution. The right answer is option D, that is 36th amendment of the constitution. अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है गाइस दैट कि थ्रू द 35th अमेंडमेंट एक्ट जो सिक्किम को दर्जा दिया गया था वो दिया गया था एज एन एसोसिएट स्टेट, और एज अ मतलब एक कंप्लीट स्टेट का इसको दर्जा दिया गया था थ्रू द 36th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिजोरम हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ए ऑप्शन इज 53rd, बी इज 54th अमेंडमेंट, सी इज 55th अमेंडमेंट, एंड डी इज 52nd अमेंडमेंट। The right answer is option A, that is 53rd Amendment Act. Next question is, which amendment to the Constitution inserted a new Article 21A in the Constitution providing right to education? A option is 86th Amendment, B is 87th Amendment, C option is 88th Amendment, D option is 89th Amendment. The right answer is option A, that is 86th Amendment. Next question is, an amendment to the Constitution of India can be initiated by the. First is the Lok Sabha, second is Rajya Sabha, third is state legislature, and fourth one is the president. Select the correct answer using the code given below. यहाँ पर 4 कोड दिए हैं। So right answer is option D, that is लोक सभा एंड राज्य सभा। जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। So first statement is, in Article 368, two methods of constitutional amendment are mentioned. Second is, constitutional amendment bill can be initiated only in Lok Sabha. Third is, in case of any dispute between the two houses of parliament on constitutional amendment bill, joint sitting of both houses can be summoned. And fourth is, the president cannot veto a constitutional amendment bill. Which of the statements given above are correct?
आपको 4 कोड में से चूज करके बतानी है कौन सी जो है स्टेटमेंट सही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 1 and 4। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में जो है स्टेटमेंट दी हुई है 4 और लिस्ट 2 में जो है दिया हुआ है अमेंडमेंट्स। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स। तो फर्स्ट देखिए कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये हुआ था बाय द 38th अमेंडमेंट एक्ट, राइट। सेकंड इज द एबोलिशन ऑफ राइट टू पॉवर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, ये एक इंडिविजुअल भी क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जो लोडिंग ऑफ वोटिंग एज है ये तो हमने देखा, ये हुआ था 61st अमेंडमेंट के थ्रू। और जो लास्ट है एडिशन ऑफ वर्ड दैट इज सेकुलर इन द प्रीएम्बल, ये हुआ था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके थ्रू जो प्रियम्बल में 3 वर्ड को ऐड किया गया था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वहां पर 4 कोड दिए होंगे और आपको उनमें से जो है एक पिकअप करना है एज अ राइट आंसर, ओके। तो इसी क्वेश्चन के साथ गाइस मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस टॉपिक पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे जो हैं कवर हो जाएं, राइट। और यहाँ पर मैंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उनको मेंशन किया हुआ है। सो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को आप या एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके जो है इन सभी को जो है 1 by 1 जो है रीड आउट कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। टिल देन बाय बाय, सो एंड टेक केयर।